Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 8th chemistry, we'll be going further in our chapter synthetic fibers and plastics. Synthetic fibers and plastics. We have already gone through the topic synthetic fibers. We have studied the different types of synthetic fibers and the problems that are associated with them, their advantages. We have gone through all these things. We have even gone through the plastics, the two types of plastics and their uses. Clear? Now today we'll go on with the problems related with the plastics. What are the problems that are related with the plastics? So let us start with the problems related with the plastics. देखिए क्या क्या है problems with plastics. When plastics were introduced, they were held as a wonder material. However, today plastics have become a serious worldwide environmental and health concern. This is because of their non-biodegradable nature and widespread use. Now, you know, plastics, they are non-biodegradable. Non-biodegradable means they cannot be broken down by bacteria. They cannot be broken down by bacteria. क्लियर, इनको बैक्टीरियाज के मदद से ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है. ठीक है. नॉट ओनली दैट, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ, हियर एंड देयर, वेर एवर यू सी फ्यू और द अदर थिंग, वन और द अदर थिंग्स दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. मतलब हमारे लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है प्लास्टिक. अब इसके यूज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं. अब इसको हमको कम करना है. We have to minimize its use. Why? Because it is non-biodegradable and it is causing a lots of harm to our health, clear, and our environment. One of the significant environmental problem associated with plastic is the improper disposal of plastic goods by the people. And we human being does not, what we do? We litter this plastics material here and there. We throw them here and there. Clear? This is the problem with us. If we put it at a proper place, clear, so what will happen? It can be easily disposed of. Clear? It can be burnt or it can be kept at one place. But what we do? We throw it here and there. As a result, it gets into drain. It chokes those drain. Clear? It is eaten by the animals. Clear? It causes the issues with them. Clear? So you have to see that. Do you know that the plastic bags and bottles thrown on the roadside could stay in the ground or soil for years? This is because plastics are non-biodegradable. As I've already told you that they are non-biodegradable, means they cannot be broken down and they remains in their state. जैसा है वैसा ही वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं. Clear? Careless disposal of plastic bags chokes the drain, chokes the soil and hinders the absorption of water by the soil. Now what happens? They gets into the drain, as a result water cannot flow. Similarly, suppose कीजिए ये आपका soil का layer है, इसके अंदर ऐसे एक प्लास्टिक का लेयर अगर डिपॉजिट हो जाता है तो यू नो प्लास्टिक इज़ इनपरमिएबल टू वाटर, वाटर उसके थ्रू क्रॉस नहीं कर सकता है. तो क्या होगा? देयर विल बी नो सीपेज ऑफ वाटर इनसाइड. पानी आपका नीचे धरती में नहीं जा सकता. एज ए रिजल्ट वाटर टेबल विल नॉट बी रिन्यूड. Clear? Level of water will not be maintained and water table will not be renewed. Understood? It will lead to a scarcity of water or it will be cause decrease of water level inside the earth surface. Understood? If eaten by animals such as cows, it can kill them. Plastic bag can also contaminate foodstuffs because of poisonous dyes getting absorbed into the food. If burnt, they release these poisonous fumes and pollute the air. अगर वो प्लास्टिक बैग्स में अगर हम कुछ खाने का चीज़ को रख करके और फेंक देते हैं, सो व्हेन द एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, डॉग्स, दे ईट, सो व्हाइल ईटिंग बाय मिस्टेक इफ द प्लास्टिक बैग्स गोज इनटू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, दे कैन नॉट डाइजेस्ट देम. और अगर उनका डाइजेशन नहीं होगा, सो इट माइट कॉज देम अ सीरियस इलनेस और इवन लीड टू देयर डेथ. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इफ वी बर्न दैट, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो वहाँ से पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं एंड दिस पॉइजनस फ्यूम्स कॉजेज एयर पोल्यूशन. क्लियर? दे पोल्यूट द air. Also, those foodstuffs that are packed in plastic bags, they also become poisonous just because of the dyes, synthetic dyes that are used for
providing color to the plastic. Also, plastic are made with the help of chemicals. So those chemicals also come into effect and makes food quite poisonous, and it makes something that cannot be eaten. Clear? So you have to also keep in mind that plastics food items should be prevented. You cannot completely deny that, but you should try to minimize its use. Clear? We should never use or never eat those items that are packed in the plastic for a long period of time. Thankfully, over the last decade or so, a countrywide network for collection of plastic waste through rag pickers, waste collectors, waste dealers and recycling entrepreneurs has sprung all over the country. और क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से people have become quite aware and various organizations are playing an active role. Clear? They are playing an active role in getting rid of these plastics. इन plastics को गेट रीड करने में, इधर उधर जो फेंका हुआ रहता है उसको किसी एक जगह पे रखने में और उन वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने में ये प्लास्टिक्स ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छे रोल निभा रहे हैं. क्लियर? इन इंडिया सम म्यूनिसिपल एरियाज have banned the use of plastics, and they seem to have achieved success. For example, in Ladakh and Sikkim, several other states have followed suit, but implementation of ban is still not satisfactory everywhere. As you know, each and every aspects of our life, each and every steps of our life, the use of plastic is there. Clear? So we cannot completely deny the fact that plastic is an integral part of our life. We cannot completely deny its use. We can only minimize its use. Clear? Now see here, conservation action. कैसे हम लोग conserve कर सकते हैं plastic से environment को? What are the steps that can be taken to protect? First is reduction of amount of plastic used in packaging that is usually immediately thrown away. ऐसा प्लास्टिक पैकेजिंग जिसको हम तुरंत यूज़ करके फेंक देते हैं, वैसे प्लास्टिक पैकेजिंग को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी रिड्यूस दोज प्लास्टिक पैकिंग, इट विल reduce the waste plastic generated in our day-to-day life. Clear? And it will prevent the environmental degradation. Understood? Next, recycling and reuse of plastic should be encouraged. Recycling of plastics and reuse of plastic. ठीक है, ऐसा प्लास्टिक जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, वैसे बॉटल्स को हम लोग को यूज़ करना चाहिए. वैसे बॉटल्स को या वैसे प्लास्टिक के यूज़ को इनकरेज करना चाहिए. Understood? And next, plastic wrappings and bags should carry a warning label stating the dangers of plastic pollution, and shoppers should be encouraged to use their own bags or recycled plastic bags. And we should make people aware about the ill effects of these plastics. Okay? Along with that, we should encourage people to use cloth-made bags or bags that are made up of jute. Clear? So what will happen from this? From this we can prevent the environment from degradation. Environment को degradation से रोक सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपके clothes भी आपके ये biodegradable होते हैं और jute भी biodegradable होता है, and they are quite strong also. Understood? So this will help us to get rid of those plastic waste, and this will even reduce the waste material that are produced in the environment. Clear? So in this way we can encourage people to get rid of plastics and help them to prevent the environmental pollution. Understood? Next, what you can do, what can we do, how can we help in environment conservation, how can we prevent environment degradation, what are the steps that can be taken, इसके बारे में अब हम देखते हैं. सबसे पहला क्या है? बाई प्रोडक्ट्स विथ लेस प्लास्टिक पैकिंग. वी शुड यूज़ प्रोडक्ट्स दैट हैव गॉट लेसर प्लास्टिक पैकिंग. ये पहला स्टेप हम कर सकते हैं. सेकेंड, शॉपर्स शुड यूज़ देयर ओन बैग्स और रिसाइकल्ड पेपर बैग्स. और जो हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वी कैन यूज़ आवर ओन बैग्स मेड अप ऑफ क्लोथ्स और मेड अप ऑफ जूट. क्लियर? वी कैन यूज़ दीज टू बैग्स. Understood? Next, support recycling schemes and promote support for one in your local area. और recycling schemes जितने भी हैं उन चीज़ को हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए. इससे क्या होगा? आपके रीयूज़ होगा.
जो प्लास्टिक आपके लिए वेस्ट है वो जाएगा, वो फिर से रिसाइकल होकर के और एक नए मटेरियल के रूप में मार्केट में आएगा. सो व्हाट विल हैपन, दिस विल रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, practice and promote proper disposal of plastics in your home. Never dispose of plastics in sewage system, and we should promote a proper disposal system for the plastics. क्लियर, प्लास्टिक के लिए एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए. कहीं भी हम लोगों को सीवेज में, गटर में या फिर आपके मोहल्ले में जो नाली होता है उसमें हमें प्लास्टिक्स को नहीं फेंकना चाहिए. व्हाट विल हैपन, इट विल चोक द ड्रेनेज. एज अ रिजल्ट वाटर विल नॉट बी एबल टू फ्लो एंड इट माइट लीड टू अ डिजीज. Clear, it might cause stinking and it might lead to a disease. Clear. Pick up any plastic litter that you see in the vicinity and dispose it off in a proper place. Encourage others to do likewise. And when you see plastics in your environment, in your neighborhood, you throw it off at a particular place where that particular place is made for its disposal. Clear. And encourage others also. Ask others also to dispose it off in the same way. Clear. In this way we can prevent the littering of plastics here and there. Okay. Never throw plastic litter in streets, on pavement or in drains. हम लोगों को कभी भी पेवमेंट्स पे, रोड्स पे, ड्रेन्स में, इन सभी चीज़ों में प्लास्टिक को थ्रो नहीं करना चाहिए. क्लियर. एंड नेक्स्ट, सेट एन एग्जाम्पल टू अदर्स एंड इनकरेज देम टू हेल्प. Or we should try to set an example to others and we should try to help others who are trying to set an example for us. अगर कोई वैसा काम कर रहा है तो उनको हमें encourage करना चाहिए and we should try to go hand in hand with them so that environment as a whole is protected, so that our future is protected. Clear? As a responsible citizen, always remember 4R principle. Refuse means जो हमारे ज़रूरी का चीज़ नहीं है उसको हम रिफ्यूज़ करेंगे. क्लियर. अगर इमेजिन करो कि आप अपने घर में 2 वाटर बॉटल से काम आपका हो सकता है, वाई टू बाई 4? हमें 4 खरीदने की ज़रूरत नहीं है. सो वी शुड रिफ्यूज़. रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग. एक्सेस कंजम्पशन किसी भी चीज़ का हो रहा है तो उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए. रीयूज़, कोई भी चीज़ को हमको रीयूज़ करना चाहिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल. Clear. And last is recycle. We should try to recycle things and then use it again and again. Clear. So these are the 4 R's that are needed to be followed in our day-to-day life to make this environment a quite beautiful place to live in and to make a better future for ourselves. Clear. So that's all for today in this video, everyone. Thank you.